been asking, sir, we don't have laptop, we don't have good connectivity. So if ministry can help at that level, that will be great help for those students. Most of them have the accessibility, but few don't have. So since we have the opportunity of asking you, requesting you, so if that can be considered, that will be great help for those students, sir. नहीं, वो एक तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, बहुत लोग पास नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहे, सब किसी कहेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आपकी जरूरत नहीं, मोबाइल से भी लोग बात कर सकते हैं। देखिए ये सब कहने वाली बातें रहती हैं, और हम लोग के पास वो डोमेन भी नहीं ना, हम लोग उस इशू पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इट विल बी पेंडोरा बॉक्स फॉर ऑल, हर आदमी को मेरे पास नहीं है। क्योंकि जब आप स्केल अप करना चाहो फ्यूचर में, तो फिर वो इशू एक रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि अगर 1000 हो गया तो फिर और सबको देना पड़ेगा। 1000 10,000, आप तो 1 लाख से कम की मत सोचा करो। अलका धमेजा जी कोऑर्डिनेटर हैं इस समय, नोडल ऑफिसर, शी इज द प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोफेसर अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट। हेलो सर। हेलो एवरीवन। जी अलका जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मैडम टाइम हो गया तो शुरू करें, क्योंकि अग्रवाल साहब थोड़ा देर से ज्वाइन करेंगे, उनका एक प्रोग्राम है 12 बजे तक, और ही सेड दैट ही विल ज्वाइन अराउंड 12:30। टाइम सर अभी 5 मिनट्स है हमारे पास। अच्छा, हमने जल्दी लॉग इन किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि जल्दी ही शुरू करते हैं, क्योंकि कई बच्चों में फिर वो बोलेंगे आपने जल्दी शुरू कर दिया। अभी विल स्लोली जॉइनिंग अस सर, पीपल आर स्लोली जॉइनिंग इन। 12 o'clock का ही टाइम दिया था ना, तो धीरे धीरे अब काफी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के लोग ऑलरेडी आ गए हैं। बच्चे भी जोड़े हैं ना आपने, बच्चों को भी इनवाइट किया है ना? बच्चे भी सर जोड़े हैं, उनको हमने YouTube लिंक से जोड़ा है। अच्छा, ठीक है। ओ तो अच्छा, इसमें जो हमें पार्टिसिपेंट्स दिखेंगे वो बच्चे नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो नहीं, वो क्या है ना, कोई डिस्टर्ब कर दे, कोई डिस्टर्ब कर दे। हाँ, बस इसीलिए। हाँ जी, आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए इसलिए। 100 है मैक्सिमम, तो 100 होंगे, 60-70 तक जुड़ेंगे, और नहीं रह पाए तो बाद में उसको देख लेंगे। YouTube में तो अवेलेबल है ना, अगेन दे कैन लुक इनटू इट। Yeah. That was also a reason we thought that we'll go for YouTube live, and I think many students have given their acceptance. काफी join करेंगे आज। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर आप परमिट करें, एक बार हम अपना पीपीटी चेक कर लें सर। हाँ, कर ली जी, थैंक्स। अलका जी, क्या ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। थैंक यू। मैं एक बार अशोक से भी कहता हूँ, वो फोटोग्राफ्स भी चला के देख लेता है 1 सेकंड में। फोटोग्राफ्स भी, हाँ जी, वो भी चला के देख लीजिए। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हाँ, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अशोक 1-2 मूव कीजिए प्लीज। हाँ, दैट्स बेटर। थैंक यू अशोक, थैंक यू वेरी मच। मैडम शुरू करें, टाइम हो गया तो शुरू करिए अभी। 1 सेकंड सर। अलका जी बस 1 मिनट दिएगा, मैं YouTube भी चेक कर ले रहा हूँ कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, आप चेक कर लीजिए YouTube, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। आई थिंक मेनी हैव जॉइंड, सो वी कैन स्टार्ट। बस आप YouTube लिंक चेक कर लीजिए, फिर हम लोग करेंगे। मेरे हिसाब से आप एग्जैक्ट 12 बजे शुरू कर लीजिए, जल्दी मत करिए। बस सर, ओनली 1 मिनट लेफ्ट है, वी आर वेटिंग। हाँ जी।
रियल का यूट्यूब लिंक चल रहा है। थैंक यू। ठीक है, अब आप शुरू कर सकती हैं जब आप चाहें। बस just 1 minute left, Mayank. We will start sharp at 12. मैम शुरू करें, कहीं निधि से। निधि प्लीज शुरू कीजिए। Namaskar to all. Let me ask you to recall the days when we all were kids. Those were undoubtedly the best days of our lives, the childhood days. Now imagine a child who was forced to sit outside the classroom on the ground. He was not even allowed to drink water from taps that the upper caste children used. He had no choice but to study Persian, as the Sanskrit teachers were not willing to teach. This child was none other than Bhimrao Ambedkar. From a local school in Satara, this child went on to study in premier institutions like University of Bombay, Columbia University, and London School of Economics. The life of Dr. B.R. Ambedkar is a saga of great struggle, who, in spite of facing the discrimination throughout his life, rose to great heights. He occupied important positions entirely on account of his merit and hard work. Dr. Ambedkar's life and work has influenced and inspired both the young and the old generations. He is considered as the champion for Dalit cause. He unfettered the oppressed masses and secured human rights for millions. We all know that he was the chief architect of the Constitution of India. Fondly known as Baba Saheb, Dr. Ambedkar is one of the most illustrious sons of India and a great national leader. To recognize the contribution of Dr. B.R. Ambedkar, on 22nd April 2022, the national launch of the setting up of Dr. Ambedkar Center of Excellence, DACE, held at Banaras Hindu University, Varanasi, by Shri Virendra Kumar Ji, Honorable Minister of Social Justice and Empowerment, and Chairman, Dr. Ambedkar Foundation. I welcome you all to the inauguration of Dr. Ambedkar Center of Excellence,
DACE at the Indira Gandhi National Open University. As part of the national launch, Indira Gandhi National Open University signed an MOU to establish the DACE in the university. This center has been housed in the School of Social Sciences of the university. On this historic day, we are fortunate to have with us Shri Rajesh Agarwal ji, Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, as the chief guest. We will soon be joined by Professor K.K. Agarwal, Chairperson, National Board of Accreditation also. I welcome you, Professor K.K. Agarwal and Shri Rajesh Agarwal ji. Thank you for gracing us with your presence, sir. Now, I request Professor Suhas Shetgovekar, Director, School of Social Sciences, Ignou, to deliver the welcome address. Ma'am. Thank you, Dr. Nidhi, and good morning, everyone. Ignou has continuously striven to build an inclusive knowledge society through inclusive education. The mandate of the university is to provide access to higher education to all segments of the society and to reach out to the disadvantaged. And with addition of Dr. Ambedkar Center of Excellence, the university is able to take a step further in the direction of achieving its objectives and contributing to nation building. In tandem with its objectives, DACE is now all set to impart coaching to the 100 candidates that were selected pan-India via common entrance test. I'm sure that with the vast reach and resources that Ignou has, and also with the use of a variety of media and latest technology, DACE Ignou will be able to provide appropriate guidance and mentoring to the candidates. And the process starts today with this inaugural program, for which it is my pleasure to welcome one and all. On behalf of School of Social Sciences and DACE Ignou, I welcome the chief guest for today's inaugural function, Honorable Shri Rajesh Agarwal, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. We are grateful to you, sir, for taking time out from your busy schedule and gracing the inaugural function today. I also welcome Honorable Professor K.K. Agarwal, who will be joining us very soon, who is Chairperson, National Board of Accreditation. And we are very grateful for his presence and his presidential address. We look forward to the same. I extend my welcome to Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, who is a guiding light in all our endeavors. It also gives me an immense pleasure to welcome our Pro-Vice Chancellors, Professor R.P. Das, Professor Satyakam, Professor Uma Kanjilal, Professor Sumitra Kukreti, Dr. Shrikant Mohapatra, and Dr. Manrup Singh Meena, who always support us in all our activities. We also welcome all the directors and heads of various schools, regional centers, division, and units of Ignou, and the Ignou officials attending the program today. Also a welcome to Professor Alka Dhameja, the Nodal Officer for DACE at Ignou, and her team. And a very warm welcome to all our candidates. We have best wishes for them. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now, I request Professor Alka Dhameja, Nodal Officer, DACE, Ignou, to deliver the opening remarks. Ma'am. Thank you, Nidhi. Thank you all. Thank you, Dr. Suhas, and all the chief, everybody present here. Good afternoon to everyone. Actually, we feel very happy today, as this is the day we have been actually waiting for, preparing for since April 22nd. As mentioned before, this is the day when MOU was signed between Ignou and the ministry. Today, we finally get to connect with our selected candidates in the virtual mode. The Ministry of Social Justice and Empowerment's vision of making education accessible to the socially disadvantaged sections of the society fructified with the establishment of DACE for scheduled caste civil services aspirants. And when Ignou was chosen as one of the 30 universities to set up DACE in School of Social Sciences, it really felt very special.
Herein lies our opportunity to take the mandate of Ignou forward and make quality learning accessible to all. Ignou DACE actually aims at creating a repository of resourceful opportunities to learn, imbibe, compete, and succeed, instilling the culture of service to the nation and community in the selected candidates is our objective. And also another objective is to underline the importance of values of honesty, commitment, and social justice, and also hone the skills of adaptation, judgment, and informed choice in the selected candidates. This entire process of setting up DACE in School of Social Sciences has been quite extensive and collaborative, be it inviting applications for DACE from aspirants, screening of huge number of applications, 13,158 to be precise, setting up of question papers in multiple choice format, moderating the papers by a team of subject experts, conducting the common entrance test on July 31st, all across the country. In 54 centers, we did this, and it was a mammoth task, evaluating 2,039 OMR sheets and selecting 100 meritorious candidates. It was quite impressive. School of Social Sciences and its DACE team worked tirelessly, and I really am very grateful to our director and my entire team, which has Dr. Mayank Kumar, Faculty of History, Dr. Deepak Palewal, Faculty of Sociology, Dr. Meetu Das, Faculty of Anthropology. Now, coming to the uniqueness of Ignou, I would just like to say a few words. The university, the entire process of this work was pretty conspicuous. You know, the uniqueness of the university came out very well because of the teamwork it reflects. We got tremendous support from all the Ignou divisions, be it Vice Chancellor's Office, Computer Division, Student Evaluation Division, Academic Coordination Division, Student Administration Division, Center of Online Learning, and so on. And I think the second uniqueness of Ignou is the use of information and communication technology, which it uses to cater to its pan-Indian presence. This has led to specific and a lot of innovative decisions, even in DACE. Now, another, I think, feature that I would like to mention is that DACE is doing a pioneering work by selecting 5 candidates with disabilities and 1 candidate from others category in line with the objective of the university, the objective of social inclusion and justice. So in the beginning, like you saw on the slides, we had also organized a slogan competition and a panel discussion on 4th of August 2022 as a part of the launch of Nasha Mukti Abhiyan at the behest of DACE Foundation to commemorate 75 years of India's independence. The events got a very good response from everybody, and the prize distribution of the events took place on 29 September 2022. Ignou has always given importance to digital learning, and that is the USP of Ignou, online learning. We actually know the import of this feature much before the onset of COVID actually showed this to the world. So taking a cue from the online USP of Ignou, DACE has also decided to go online with its coaching, and it will be starting its classes on 10th of October now and shortly, and a class schedule will be shared with the students. So almost 70% of the students also opted for the online mode of instruction. So this is how we begin our work. Today is the induction after this session, and very soon the class schedule will be shared with the students, and we will be starting formally with our online classes. Thank you so much. Thank you. Thank you for being here. And we are very happy to be a part of DACE, and just hope that we are able to fulfill the objectives of DACE and reach some level of success. Thank you. Thank you, Professor Alka Dhameja, for informing all the viewers about the activities which the center has already begun with. Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, sir. Before assuming charge
as the Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University in... Didi, it's okay, hai na? Let me come, hai na? Yes, sir. Please address the gathering. Thank you. Good morning to all of you. Shri Rajesh Agarwal ji, Honorable Chief Guest, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Shri K.K. Agarwal ji, who is going to preside over the function, Honorable Chairperson, National Board of Accreditation, my own colleagues and students. It's a historic occasion for Indira Gandhi National Open University to have this DACE here in the university and try to reach to the students for the preparation of the IAS examinations. We are thankful to the ministry for giving us an opportunity to select an institution which is always endeavoring to reach the unreached, and that through a blended mode. And this has given us historic results. For 100 seats, we got 13,000 applications from all corners of the country. And the spread is wide. Then out of 2,000 students who could appear, 78% they opted for this blended mode, the online mode. Because here in this case, there is a lot of advantage to the learners. In case of face-to-face interactions, if on a particular day, the student is not available, then he may miss that class. But now in this mode of online, even if the learner is not present, then the videos, the YouTube, that is also going to help him at a later stage for reuse again and again also. And the material also, which we are using, that is also of very high quality. Even our own study materials, which are being used for the public administration, for the sociology, and other disciplines, we are going to use it to help our learners. So material online, through channel also we would like to reach to the learners. And the most important thing is, wherever we feel, we would like to identify the language-wise, the mother tongue-wise, the learners also. And if we feel that in a particular mother tongue, the learners are more comfortable, then we can arrange experts to reach to them in their own mother tongue. That is the peculiarity when we are going for this particular mode, this specific mode for the coaching. Because here the number of lectures, whatsoever may be, we can add also depending upon their requirements. And therefore, we do have a vast pool of resources. Around 40,000 academic counselors and 300 teachers are available with us. And best of them, they will be made available for this purpose. Because it is our prestigious project. And the prime emphasis of all of us is that we have to give the best to our learners. And we must also see that most of them, they may get good marks, good ranking in their competitive examinations also. Because we have got the best talent. Out of 13,000, we have got 100. So already we have got the best talent. The only thing is we would like to nurture them so that they can show their worth in the competitive examinations and to get the best out of it. I am really fortunate to see the presence of Rajesh Agarwal ji. He was earlier with the Ministry of Higher Education and the Skill. And he is very kind to our university also, because almost all the skill projects which we are having with us, more than 100 skilled centers, the skill training project of the Government of India. And also recently we had an MOU with the National Skill Development Corporation. Everything he has conceptualized, he has motivated, and he has inspired us. And today he is in the section wherein specific disabled learners,
their concerns, they're also being addressed. And we are fortunate here that at least 5 students, we got it from that particular category also. So there also we can look into their specific requirements and try to address their concerns also. I'm really fortunate to seek the blessings of Professor K.K. Agarwal ji, who is always kind to the university. He was in our board and still he is in our board to guide our endeavors from vision to action. Every decision which we take in the board of management, we seek his valuable guidance and support. He is a senior academician, vice chancellor for more than 10 years, and National Board of Accreditation chairperson, and has got vast national as well as international experience. So both of these great luminaries, they are available with us today to guide our students who want to seek their blessings in this endeavor. So thank you very much. My own team, they deserve special compliments for taking this initiative in an effective manner. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Nageshwar Rao, sir. Thank you for sharing how appropriate our university is for such a prestigious project. Let me now introduce Shri Rajesh Agarwal ji, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment. After completing B.Tech in Computer Science from IIT Delhi, Shri Rajesh Agarwal entered the Indian Administrative Service in 1989. Prior to the ministry, so let me just say a few words for the audience here. All right. Prior to the Ministry of Social Justice and Empowerment, he has served in the Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Petroleum and Natural Gas, and Ministry of Corporate Affairs. During his IIT days, he was fascinated with natural language understanding, fuzzy logic, and algorithms. His contribution towards the big data analytics is visible through the work he has done with the help of various citizen databases, where he aims to weed out the bogus beneficiaries and targeting subsidies to genuine beneficiaries. He also is very passionate about accessibility issues, like making the government websites accessible to the blind, deaf, and persons with other disabilities, accessible buildings and roads for all, electronic voting machines with braille stickers, disabled-friendly polling booths. He has also written more than 6 dozen judgments as adjudicating officer under Information Technology Act 2000. He has received many prestigious awards like Aadhaar Innovations Award from Honorable Prime Minister, Indian Express IT Award, DataQuest Editor's Choice for Chief Information Officer, to name a few. On behalf of the entire university, sir, I welcome you, and I also invite you to address the gathering. Thank you. थैंक यू। मैं डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फर्स्ट बैच के सभी 100 बच्चों का स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चे बहुत लकी हैं कि इग्नो की पूरी टीम लेड बाय ऑनरेबल वीसी प्रोफेसर नागेश्वर राव और उनके बाकी सभी प्रोफेसर्स, मैंने पिछले 1 साल में स्किल सेक्रेटरी देखा कि और मेरा काफी कांटेक्ट रहा आईटीआई के बच्चों को इग्नो के कोर्सेज कराने के उपलक्ष्य में, या अग्निवीर स्कीम आ रही है उसमें कि हम किस तरह से उनको सर्टिफिकेट्स दे पाए। तो मैंने पूरा देखा कि प्रोफेसर राव और उनकी पूरी टीम बहुत एक फॉरवर्ड लुकिंग टीम है और बहुत पैशन के साथ काम करते हैं। एक्चुअली उतना ही जरूरी नहीं होता, इफेक्टिवनेस भी जरूरी होती है। तो मैंने देखा कि जो चीज ठान लेते हैं वो 1-1.5 महीने में आगे उसको बड़ा इफेक्टिवली लेके भी जाते हैं। तो इसलिए आई फील हैप्पी अबाउट ऑल द 100 किड्स दैट दे आर इन सेफ हैंड्स। मेरा महाराष्ट्र का आर्डर है, तो बाबा साहेब वहीं के थे, तो काफी चीजें हमें देखने को मिलती थी। मैं जलगांव और अकोला जिले में भी रहा और उधर भी बाबा साहेब के बारे में बहुत चीजें सीखने को मिली। तो जो मैं ये देख रहा था कि जो सेंटर का एक फिलॉसफी है वो पूरा बाबा साहेब की फिलॉसफी को फॉलो करती है।
तो हम कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ कोचिंग कैसी होगी, विच एस्पायर्स सिविल सर्वेंट्स हु कैन अपहोल्ड वैल्यूज ऑफ और वर्च्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बाबा साहब ने संविधान में बेसिकली हमें यही वैल्यूज बताई। और दूसरा हम कह रहे हैं कि जो एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, जो बाद में ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना चाहते हैं बच्चे, अभी से हम उनमें वैल्यूज इंस्टॉल करेंगे, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, सोशल जस्टिस एंड इनकलकेट कल्चर ऑफ सर्विंग नेशन एंड कम्युनिटी। तो अगर हम बाबा साहब की जिंदगी पे देखें ध्यान से, तो उनका जीवन भी पूरा इसी शैली पे था। तो अभी एक छोटी शुरुआत है इस साल 100 बच्चों से, और थोड़ा ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग रहेगी, कहीं कहीं हाइब्रिड भी रहेगी। तो इग्नू का ये मॉडल काफी अच्छा है, क्योंकि अगर ऑनलाइन कंटेंट बहुत अच्छा बन जाता है, टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, तो नेक्स्ट बैचेस में स्केल अप काफी मैसिवली हम इस चीज को कर सकते हैं। और कोविड ने हम सबको ये सिखा दिया है कि जिस टीचिंग को या ट्रेनिंग को हम ऑनलाइन संभव नहीं समझते थे, तो बहुत सारी चीजों में अब वो बहुत आसानी से होने लग गया है। टीचर भी अब कंफर्टेबल हो गए हैं ऑनलाइन पढ़ाने में और बच्चों को हैंडल करने में। बच्चे भी बड़ा कंफर्टेबल है अभी ऑनलाइन मेथड में। और जहाँ पे कई बार कनेक्टिविटी की थोड़ी कमी होती है, तो वो कंटेंट बाद में यूट्यूब में और उधर कभी भी आपको मिल जाता है। सिर्फ ये होता है कि उसी टाइम आप सवाल नहीं पूछ सकते, बट आई एम श्योर कि इग्नो पूरा आपको हेल्प डेस्क और वो सब सुविधाएं देगा कि आप बाद में भी कभी भी टीचर से कनेक्ट कर पाए और अपनी शंकाएं पूछ सकें। जैसे कि बीसी साहब ने बताया है कि 100 एप्लीकेशन के लिए देश के कोने कोने से 13,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हायर एजुकेशन में, और चाहे वो आईआईटी हो या कुछ भी हो, और सिविल सर्विसेज में कोई भी सिविल सर्विस हो, उसमें दूर दराज के बच्चे भी आ पाए। जो बच्चे अंग्रेजी भी नहीं जानते, अपनी रीजनल भाषा में उन्होंने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छा काम कर रहे थे, तो वो बच्चों को भी एक मौका मिले। पर आज अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि, क्योंकि मैंने तो आईआईटी 83 में ज्वाइन किया था, आईएएस 89 में ज्वाइन किया, उस टाइम हम बहुत रॉ टैलेंट भी देखते थे कि दूर दराज के गांवों से बच्चे आते थे, पूरा अपना हिंदी में पढ़े हुए या दूसरी भाषा में पढ़े हुए, जिन्होंने कभी दिल्ली देखी भी नहीं होती थी। पर आजकल क्या हो गया कि बहुत 3, 4, 5 लाख रुपए खर्च करके बच्चे कोचिंग करते हैं दिल्ली में, 2, 2, 3, 3 साल रह के, या इंजीनियरिंग कॉलेज की 4, 4 साल तैयारी करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव। और ऐसे बच्चों का संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। अपने को चाहिए कि सब तरह के बच्चे आए, सभी स्टेट ऑफ सोसाइटी से, और सभी शहरों से भी आए, गांवों से भी आए, दूर दराज के गांवों से भी आए। और काफी फर्क पड़ता है इस चीज से। जैसे मेरे पापा तो टीचर थे जालंधर शहर में, तो मैं टीचर का बेटा हूँ। तो जो मेरा बेटा है वो एक आईएएस अफसर का बेटा है, तो दोनों की जीवन शैली में काफी फर्क होता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि इग्नू के इस माध्यम से, जो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, अपने रिमोट क्षेत्रों के बच्चे भी इसमें आ पाएंगे। और अब मेरी सिविल सर्विस खुद की 33 साल की हो गई है। महाराष्ट्र में कई जिलों में काम किया, ठाणे, रत्नागिरी, जलगांव, अकोला, और ऑफ कोर्स मुंबई में। दिल्ली में बहुत सारे मंत्रालयों में काम किया। एक सिविल सर्विसेज का कैरियर एक बहुत अच्छी चॉइस रहती है, क्योंकि आपको बहुत सारी सेक्टर्स में काम करने को सीखने को मिल जाता है, बहुत सारे ज्योग्राफीज में काम करने को मिल जाता है। जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत जिलों में काम किया, मुंबई में किया, दिल्ली में काम किया, जो कि कोई बहुत सारी दूसरी सर्विसेज में संभव नहीं हो पाता। फिर आपको लोकल से लेकर ग्लोबल इश्यूज तक काम करने को मिलता है। जब आप डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, तो आपको गांव के सरपंच भी आके मिलेंगे, गांव वाले भी आके मिलेंगे, आप गांव में जाके रुकोगे भी 2 दिन 4 दिन हर महीने, तो इसलिए आपको वो एक जीवन भी समझ में आता है, उनकी समस्याएं समझ में आती हैं। जब आप भारत सरकार में काम करते हैं, तो आपको ग्लोबल इश्यूज में काम करने को मिलता है। जब मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में था, तब पूरा अपने को मिड ईस्ट से कैसा हो रहा है, वेनेजुएला का क्या इशू है, ईरान का क्या इशू है, रशिया से कैसे अपना क्रूड ऑयल आ रहा है, कहाँ कहाँ हम अपने ड्रिलिंग कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको ग्लोबल इश्यूज भी समझ में आते हैं। फिर उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने को बहुत सारी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप किसी भी सर्विस में जाओ,
IAS में, IPS में, फॉरेस्ट सर्विस में या और किसी भी सर्विस में, आपको ह्यूमन टच वाली स्टोरीज और उसमें काम करने को बहुत मिलता है। तो अभी जैसे मैं डिसेबिलिटीज में हूँ, कल ही मैं भुवनेश्वर में था, तो उस हॉस्पिटल में मैं ब्लाइंड बच्चों को भी देखा और डेफ बच्चों से भी मुलाकात हुई, और कई बच्चों को जो स्पाइनल इंजरीज थी और इंजरीज थी उनसे भी बात हुई, और उनका जिंदगी कैसे होगी, हम कैसे सुविधा ला सकते हैं। और दूसरा, फिर जिंदगी ये भी सिखाती है कि आपको सिंपैथी की तरफ से एम्पैथी पे जाना, कि हम किसी भी ऐसे सिटीजन को मिले जिसका हम भला कर सकें, तो हम उसको दया भाव से नहीं देखें, सिंपैथी से पूरा के बजाय हम एम्पैथी पे जाएं, कि हम उसकी जगह अपने को खड़ा करके कि उसकी क्या अपेक्षा है सरकार से, बाकी लोगों से, हम वो पूरी करने की कोशिश कर सकें। थोड़ा सा मैंने तो 33 साल पहले एग्जाम दिया था, अब एग्जाम का पैटर्न काफी चेंज हो गया है, बाकी के सिलेबस चेंज हो गए हैं, और थोड़ी सी मैं 2-3 ही टिप्स देना चाहूंगा। एक तो कि आप सभी सब्जेक्ट्स में आप अपना वीकनेस स्ट्रेंथ भी देख लीजिए, और कितने कितने मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट के, वो भी देखिए। और ऐसी गलती मत करिए कि आप एक ही चीज पे ज्यादा समय लगा लें। मतलब हाउ टू डिवाइड टाइम इक्वली बिटवीन सब्जेक्ट्स, वो बहुत जरूर ध्यान से करना चाहिए। कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पे 70-80% मेहनत कर ली, उसमें ठीक है 30-40 नंबर ज्यादा ले आए, पर दूसरे में मेहनत कम की तो उसमें 100 नंबर गवा दिए। तो ये ध्यान से देखने की जरूरत है। दूसरा, जैसे मैं स्किल सेक्रेटरी था 1 साल तक, तो हम बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट कंपनी से बात करते थे कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप बच्चों में क्या देखते हैं, तो वो कहते थे हम स्किल्स के बजाय कितनी नॉलेज है उसकी बजाय, मतलब ग्लोबल आंसर यह था कि क्या देखा जाता है, ग्लोबल आंसर है कॉन्फिडेंस, 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 कि बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये आपने इंटरव्यू के टाइम ज्यादा पढ़ाकू बनने की बजाय आप कॉन्फिडेंस मन में लाना है और बिना डरे अपने आगे बढ़ना है। दूसरा, कोविड के बाद थोड़ा सा ये आंसर चेंज हो गया, अभी भी है कि कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, पर आजकल वो ये भी देखते हैं एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, टू अनलर्न एंड रीलर्न, कि जो आपने अभी तक जिस पद्धति से काम करते रहे हो उसको चेंज करने की जरूरत है। कोविड में बहुत लोगों को नौकरियां चेंज करनी पड़ी, तो कई लोगों ने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया, कईयों ने नहीं कर पाए, लुढ़क रहे। तो ये अभी और ज्यादा आगे आगे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज आएगा, ग्लोबल आप रशिया की और बाकी चीजें देख रहे हो क्या हो रहा है, तो एबिलिटी टू लर्न, रीलर्न, unlearn new things, go to new jobs, learn new things, that becomes very important. तो आखिर में मैं आपको सबको, बच्चों को शुभेच्छा देना चाहूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक जैसे हम सुपर 30 सुनते थे, अगले साल हमें सुपर 100 का भी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगा। तो इग्नू के नागेश्वर राव जी और बाकी पूरी टीम, प्रोफेसर अग्रवाल जी और सभी बच्चों का मैं फिर से शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। Thank you, sir. You have shared your experiences and inspired us to move from sympathy to empathy. Your tips on time management, allocating time to all subjects, confidence building will definitely help the students in their preparation. I'm sure the young minds present here are already feeling motivated. Thank you, sir. Professor K.K. Agarwal, Chairperson, National Board of Accreditation. Professor Agarwal obtained his Bachelor of Engineering from Punjab University. He received his master's degree as well as PhD from National Institute of Technology, Kurukshetra. After a distinguished service of 27 years at NIT Kurukshetra, Professor Agarwal served as Pro-Vice Chancellor, Guru Jambeshwar University, Hisar, for a period of 3 years. He was the founder, Vice Chancellor of Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, where he continued for a period of 10 years.
Professor K.K. Agarwal has published around 400 papers in the reputed journals. He has been widely consulted by the industry, most notable being his contribution towards the reliability analysis of PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Professor Agarwal was conferred the honorary fellowship by Broadcast Society of India. He was decorated with Lifetime Achievement Award by Institution of Electronics and Telecommunications Engineers, and also by Computer Society of India. Professor Agarwal has been associated with National Board of Accreditation in various capacities since its inception. On behalf of the entire university, I welcome you, sir, and I would also like to invite you to address the gathering. Sir. Thank you, Nidhi. Thank you for the introduction. My friend, chief guest for the day, Shri Rajesh Agarwal ji, Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, and doing a tremendous work in skill education in the country. Professor Nageshwar Rao, one of the most dynamic vice chancellors in the country, taken Ignou to next level of height, and this is a new experiment which he is beginning today. Professor Alka Dameja, Professor Suhas Shetgaonkar, Dr. Nidhi Tewatia, Dr. Deepak Paliwal, other distinguished members who have joined, and the young aspiring students. First of all, I would like to congratulate these students to have made an effort to enroll themselves in this prestigious program of the country. Country has started this scheme with a very great conscious effort that some students who, as Rajesh just was telling, could not get probably that much facility in the earlier life, in the childhood, and so on and so forth. But should they remain deprived? Certainly not. So with that effort in mind, the government of India has started this scheme of giving special coaching, giving special emphasis to these students to make it in the national mainstream by way of the most coveted service in this country. Rajesh ji has already given some tips to you for final interview and how to prepare for the exam. I have been fortunate to associate myself with the selection of IAS officers for last 30-35 years. And every year, every alternate year, to be more realistic, I've been giving 1 week to UPSC in this exercise. But I find that the experience is very varied. And I have no hesitation to say that the students from all cross sections of the society, including the sections unreached so far, have been equally bright. What has been lacking is confidence. What has been lacking is communication skills, not the real zeal to serve the country. It has not been lacking. It is equally good. मैंने बहुत बार बच्चों से जब इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं बैठते हैं तो थोड़ी इन डेप्थ बात होती है. बच्चों की राष्ट्र सेवा में कोई फर्क नहीं है कि वो किस फैमिली से आते हैं. सिर्फ ये है कि कभी वो थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, कभी विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो इससे वो कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते. तो इस कमी को दूर करने के लिए ये सेंटर्स शुरू किए गए हैं और देश में काफी सेंटर्स को इवन स्टूडेंट्स को इनरोल करने में दिक्कत आई. बट इग्नू का name and stature and the track record was such that I was really astonished that this center got more than 13,000 applications, while many centers could not even reach a double figure or not 100. Now, out of 13,000 applications, 2,300 plus appeared in the entrance test, and the Ignou conducted tests at several centers in the country
and finally picked up 100. So I will not be wrong to say कि आपने एक सब प्रीलिम तो आईएएस का क्लियर कर लिया है। जो इतना जो फिल्टर आपका हुआ है, इससे ये है कि आईएएस का प्रीलिम तो आपका जब होगा सो होगा, लेकिन आईएएस के प्रीलिम की तैयारी आपकी काफी हद तक ठीक है, नहीं तो इग्नू में आपका सिलेक्शन नहीं होता 2300 में से 100 में। तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आप बाकी बच्चों के मुकाबले आईएएस के ज्यादा नजदीक आ गए हो, और थोड़ा सा और एफर्ट आपको आगे ले जाएगा। उस एफर्ट में हम सब आपकी हेल्प करेंगे, हम सब आपकी मदद करेंगे। कुछ देश में समस्याएं हर देश में होती है, बड़े देश में ज्यादा होती हैं और डाइवर्स कंट्रीज में और ज्यादा होती है, और हमारे जितनी डाइवर्सिटी दुनिया के किसी देश में नहीं है। मेरे ख्याल से सारा यूरोप भी मिला लें तो हमारे देश की 25% डाइवर्सिटी भी नहीं आती, बल्कि हम बरसों भी एक इंटरनेशनल रैंकिंग की मीटिंग में थे तो हम उनको यही कहते हैं, आप डाइवर्सिटी पे इतना सिर खपाते हो कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं। हमारे देश में तो जब केरला का बच्चा उत्तर प्रदेश में आके पढ़ता है, उसकी डाइवर्सिटी कहीं ज्यादा है फ्रांस का बच्चा जब जर्मनी में जाके पढ़ता है। तो जहां तक डाइवर्सिटी का सवाल है, हमारे देश में तो डाइवर्सिटी इनबिल्ट है। ऐसी मुझे नहीं पता कोई भी संस्था इस देश में क्या कहीं भी दुनिया में हो जैसे हमारा एनआईटीज का सिस्टम है। इट इज मैंडेटरी कि 50% बच्चे उस स्टेट से होंगे और 50% अदर देन दैट स्टेट होंगे। मुझे नहीं मालूम दुनिया में कोई भी ऐसा संस्थान है जो ये मैंडेट करता है कि 50% बच्चे अदर स्टेट से होंगे। तो डाइवर्सिटी तो इस देश का रेस्पेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हमें समझना, आगे बढ़ाना, वो प्रयास करना पड़ेगा जो आप करेंगे। और आप इग्नू की दिशा निर्देश में हैं तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं तो नागेश्वर राव जी को कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा और हिम्मत करें और 100 के बजाय 500 तो ले ही लें, देश का कल्याण थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हम कुछ छोटे मोटे सेंटर्स बंद भी कर दें तो कोई बात नहीं है, पर एक अच्छे सेंटर में जहां बच्चों को वास्तव में अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है, जहां वास्तव में अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, वहां जो प्रयास है वो बहुत माने रखेगा। ये एक तो प्रीलिम टेस्ट है, अब रिटन टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू है जिसमें कॉन्फिडेंस की बात है, वैल्यू सिस्टम की बात है, तो कई चीजें अब आप बार बार सुनते होंगे। आत्मनिर्भर देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, पर मैं कई बार ये कह चुका हूं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें आत्माध्ययन, आत्मचिंतन और आत्म सम्मान, ये चीजें जरूरी हैं। जब आप में ये 3 चीज नहीं होंगी तो आत्मनिर्भरता की तरफ देश नहीं बढ़ सकता। हर युवा को अपने आत्मसम्मान को भी देखना होगा, अपने आत्मचिंतन को देखना होगा, आत्मीय अध्ययन को देखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देश में जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जब वर्ल्ड ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता है तो कुछ चीजें हो जाया करती हैं, उसको कोई ज्यादा बुरा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले सप्ताह एक कार्टून देख रहा था कि जो 2 चोर चोरी करके लौटे और आपस में बात कर रहे थे, आज पैसा तो काफी हो गया, पर यदि हम यूनिवर्सिटी गए होते और साइबर क्राइम सीख लिया होता तो हमने और ज्यादा कमा लिया होता। अब ये भी एक टेक्नोलॉजी का डायमेंशन है कि चोर भी ये फील करता है कि यदि वो साइबर टेक्निक सीख ले तो वो चोरी में भी बेटर कर सकता है। ये एक डायमेंशन है टेक्नोलॉजी की, यू कांट डिनाई दिस। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो हम सबका काम करेगी, चोर का काम भी करेगी, क्रिमिनल का काम भी करेगी। Criminals are using technology more than most other citizens are using, but that is where the value system comes. That is where our cultural roots come. And वहां मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे अच्छा जो लगता है कि पहली बार किसी पॉलिसी में ये बात की गई है कि आप डिग्री कुछ भी करें लेकिन सबसे पहले अच्छे नागरिक बने। ये आपने इंजीनियरिंग कर ली, मैनेजमेंट कर लिया, मेडिसिन कर लिया, आर्किटेक्चर कर लिया, लेकिन अच्छे नागरिक यदि नहीं बने तो उस शिक्षा का बहुत कम फायदा रह जाता है। और अच्छे नागरिक बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ ऐसी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये केस स्टडी झूठी होनी चाहिए, पर यदि ये सच्ची है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो ये था कि एक बच्चे ने मीडिया में जॉब लिया
तो 3 दिन बाद उसके बॉस ने कहा आज शहर में घूमो और शाम को एक ऐसी स्टोरी लेके आना जो हेडलाइन बन सके हमारे पेपर की, बाकी सब पेपर्स को पीछे छोड़। अब वो बच्चा सारा दिन घूमता रहा, उसे कुछ ऐसा मिला नहीं। अल्टीमेटली वो एक कोने में खड़ा था, तो उसने देखा कि एक ब्लाइंड कॉर्नर था और एक बस इधर से आ रही थी और एक बस इधर से आ रही थी और दोनों स्पीड से आ रही थी। उसने लगा यदि ये बसें कोलाइड कर गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। वो कॉर्नर पे खड़ा हो गया, जेब से रुमाल निकाला, शर्ट उतारी, रुमाल हिलाने लगा, शर्ट हिलाने लगा, चिल्लाने लगा और अल्टीमेटली उसने प्रयास करके दोनों बसों को कोलिजन से थोड़ा पहले रोक लिया। बड़ा खुश दफ्तर में गया कि सर आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो उसके बॉस ने कहा सत्यानाश तुम्हारा, तुमने तो हमारी हेडलाइन खराब कर दी। यदि ये बसें कोलाइड कर लेती और तुम ही एक अकेले रिपोर्टर होते जो उसको वीडियो बना सकते तो हमारे पेपर के लिए बहुत अच्छा होता। यदि ये हमारी भावना कहीं कहीं पैदा हो जाती है, जो मैं अभी भी सोचता हूँ कि ये बात झूठी हो, पर यदि ये सच्ची है तो इन बातों से उठना, हमें ऊपर उठना पड़ेगा, वैल्यू सिस्टम को देखना पड़ेगा। मटीरियलिस्टिक वर्ड एक वर्ड है, लेकिन ये जो आपका ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है इसमें सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप इक्विटी की तरफ तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ही, आउटरीच की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है और आप इग्नोउ की छत्र छाया में आ गए हैं, जिससे मुझे बहुत विश्वास है। और जैसा राजेश जी ने कहा, सिंपैथी हैज टू लीड टू एम्पैथी। सिंपैथी से कभी कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं करता। सिंपैथी अल्टीमेटली आप खोते हैं। 2 दिन लोग सिंपैथी दिखाएंगे, 3 दिन सिंपैथी दिखाएंगे, चौथे दिन वो भी दूर हो जाएगी। Empathy is the characteristic which is required. Value system is we need. Emotional quotient what we need. राजेश जी एग्री करेंगे, जिस तरह के सर्विस में ये हैं, यदि इमोशनल क्वोशिएंट ठीक ना हो तो रोज जिस तरह के स्ट्रेसेस आते हैं, जिस तरह के नए नए डायमेंशन में काम करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होगा। और कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत चेंजेस सिखाए हैं। और एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, द अवार्ड फॉर द बेस्ट टीचर शुड गो टू कोविड, बिकॉज कोविड ने जितना हमें सिखाया उतना शायद किसी टीचर ने नहीं सिखाया। आप सब वो सीख चुके हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि जब आपका बैच आगे बढ़ेगा तो वी वुड हैव ऑफिसर्स हु आर ऑलरेडी learned from the greatest catastrophe of our life and therefore are much more mature to handle the disruptive world which has to be there. इन शब्दों के साथ मैं आज के नए प्रत्याशियों का जिन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ। नागेश्वर राव जी को, राजेश अग्रवाल जी को और नागेश्वर राव जी की सारी टीम को ये शुभकामना देता हूँ कि ये बच्चे जिस भावना से इनरोल किए हैं, भगवान भी इनकी सहायता करे और हम भी सहायता करें कि ये अपना गोल अचीव कर पाए और देश में हम जितना ये कर सकें उतना ही शायद कम है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ आईएएस के काम नहीं आएगी, ये ट्रेनिंग वैसे भी काम आएगी, हर प्रोफेशन में काम आएगी। तो इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देता हूँ और नागेश्वर राव जी को एक बार फिर इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इन युवा छात्र छात्राओं के बीच में सम्मिलित होकर अपनी बात करने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद। Thank you, Professor K.K. Agarwal, for sharing your experiences. You have motivated our learners to be more confident regardless of their heterogeneous socio-economic background. I'm sure we all will try to practice Atma Adhyan, Atma Chintan, and Atma Samman so that we all can become Atmanirbhar. That was enlightening as well as motivating to hear you, sir. To conclude the inauguration session, I would now like to request my colleague, Dr. Deepak Paliwal, DACE team member, to extend the vote of thanks. Deepak. Thanks, Nidhi. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में आज डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी डेस के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित समस्त ज्ञानी गुरुजनों का मैं दीपक पालीवाल डेस के सदस्य के तौर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सचिव श्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्री राजेश अग्रवाल जी एवं विशेष अतिथि माननीय अध्यक्ष नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर श्री के अग्रवाल जी,
का उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यवस्थित समय से समय निकाला और डेस इग्नू के प्रथम बैच के छात्रों को अपना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। निश्चित रूप से आपके अनुभवी विचार के से डेस के छात्रों को सफलता की दशा में मजबूत कदम बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। डेस की टीम को भी ये हर क्षण ये स्मरण करवाते रहेंगे कि हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका हमें संपूर्ण रूप से कार्य करना है। मैं पूरी डेस की टीम की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो विश्वास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर केंद्र योजना के माध्यम से जताया गया है, हम सभी पूर्ण रूप से उसमें खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार मैं फिर आज इन क्षणों को अपनी उपस्थिति से अनमोल बनाने के लिए आपका आभार जताता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम नित्य नए आयामों को स्थापित कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप के कारण ही हम आज डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर का शुभारंभ कर पा रहे हैं। उन्हीं की योगदान है जो हमें रेगुलर मोटिवेट करते रहते हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने समस्त सम कुलपतियों को आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके दिशा निर्देश हमको निरंतर मिलते रहता है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार देता हूँ। मैं विश्वविद्यालय के समस्त डायरेक्टर्स और अपने स्कूल की डायरेक्टर प्रोफेसर सुहास का भी धन्यवाद देता हूं कि वो निरंतर हम लोग को मार्गदर्शित करते रहती है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, हमें क्या क्या नया चीजें करनी है। मैं डेस के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अलका धमीजा का भी धन्यवाद देता हूं, जो निरंतर डेस को लेके संचित और बिल्कुल हर रोज हमारी मीटिंग रहती है कि आज हमको नया क्या करना है। मैं स्पेशल थैंक देना चाहूंगा प्रोफेसर उमा कांजिला मैम का और उनकी टीम का, जिन्होंने कुछ 1-2 दिन की मेहनत में ही पूरे प्लेटफॉर्म डेवलप किया आईसीटी के माध्यम से। उनका मैं बहुत बहुत आभार देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एससीटी के रजिस्ट्रार श्री नेगी जी का और उनकी टीम का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में रिजल्ट निकाला, जिस कारण आज हम 1 तारीख को इसका उद्घाटन कर पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं उन सभी छात्रों का स्वागत करना चाहूंगा जो डेस के माध्यम से इग्नू परिवार में आ रहे हैं। मैं उन सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Deepak Paliwal. As the session is concluding, I would now like to hand over to Dr. Mayank Kumar, team member, DACE Ignou, for a few necessary announcements for our next session. Thank you, everyone. Thank you, Nidhi. Thank you very much. It's a major announcement for the students who have not joined here, but they have joined us through YouTube. Basically, we are in a process of fine-tuning our learning management system. Therefore, it is possible that few waitlisted candidates might have received invitation for the induction, and few selected candidates might not have received the invitation. We apologize for the same. And furthermore, it must be noted that the induction program is through Google Meet. So we'll switch over from this program to Google Meet. Thank you. Thank you very much. सर, इजाजत दें तो प्रोग्राम कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक, गूगल मीट का लिंक है? मैं आपको भेज रहा हूँ मैम, सॉरी आपको नहीं भेजा, अभी भेज रहा हूँ। 1-5 पे ज्वाइन करना है ना? हाँ, जल्दी हो गया हम लोग को, तो उम्मीद थी कि ये आगे तक चला जाएगा। मयंक भेज देंगे गूगल मीट लिंक भेज। 1-5 पे करना है ना? उमा मैम, हमने ज्यादा इसलिए नहीं शेयर किया है कि गूगल मीट की स्ट्रेंथ 100 होती है, तो 100 पार्टिसिपेंट हैं और स्पीकर्स भी हैं। फिर मैं अभी भेज रहा हूँ आपको। But I think Mayank, let's share it on the excursion group so that those who want to join will join. Yeah, I'm just sharing. I'm just sharing, Uma. Okay. No, just for some time. We after. Okay. Thank you. Thank you. And thank you everybody. Thanks. Thank you. Thanks all. चलो, okay, well done, अच्छा हो गया। रश्मि मैम, आपको 2 बजे के करीब बोलना है, इसलिए आपको मैं प्रोग्राम भेज रहा था। तो मैं भाग जाऊँ? अभी नहीं हूँ, अभी आप आराम से आप घूम सकती हैं, कॉफी पिया सकती हैं। ठीक है, ठीक। लंच दे रहे क्या? लंच डेस की तरफ से मैडम भिजवा रही हैं, जोमैटो से नवरात्रि स्पेशल। आई होप मैं 10 के बाद ले जाऊंगी अपनी डेस टीम को लंच पे। It's a promise. Okay, Alka, I think we shouldn't talk here. Okay, well done. Okay, thank you. रखते हैं फिर। Thank you. Bye. Okay, done.